and associated fibrils. On the left dorsal wall of cytopharynx, at about the level of posterior margin of the cytochrome, is a very small bilobed mass called the neuromotorium. From neuromotorium, the fibril radiates into the endoplasm. Of these, four or more usually pass almost to the dorsal body wall, but the rest are shorter and are not definite in position. All are termed endoplasmic fibrils. Their function is not known, but they may coordinate the feeding movement of oral cilia. The fibril may also give mechanical support, elasticity, contractility, conductivity, and metabolic influence. पैरामीशियम में विशिष्ट या स्पेसिफिक स्टडी के दौरान यह पाया गया है कि पैरामीशियम के साइटोफेरिंग्स के बाएं पश्च दीवार जो होती है डॉर्सल वॉल पर पोस्टीरियर मार्जिन पर कुछ बाइलोब्ड द्विपालित संरचना होती है जिसे कि मोटोरियम कहते हैं। इस न्यूरोमोटोरियम से फाइब्रिल्स बाहर की ओर रेडिएट होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, जिनमें से 4 या अधिक ज़्यादातर पश्च शरीर की जो भित्ति है उस से पार होते हैं, उसमें निकलते हैं, और बाकी की जो फाइब्रिल्स है, तंतुक हैं, वह छोटे होते हैं और उनकी जो स्थिति है वह निश्चित नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि पैरामीशियम के साइटोस्टोम यानी जो मुख का भाग है वहाँ पर द्विपालित एक संरचना होती है और इस संरचना से न्यूरोमोटोरियम फाइब्रिल्स निकलते हैं, जिनमें से कुछ एंडोप्लाज्म में जाते हैं और जो शरीर के पश्च देह भित्ति में अरेंज्ड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। बाकी निकलने वाली जो फाइब्रिल्स या तंतुक होते हैं वह छोटे होते हैं और उनकी कोई निश्चित स्थान उनका नहीं होता है। इन सभी तंतुकों को एंडोप्लाज्मिक तंतुक या एंडोप्लाज्मिक फाइब्रिल्स कहा जाता है। इनका जो कार्य है वह निश्चित नहीं है, लेकिन यह समझा जाता है कि यह भोजन करने में भोजन को मुख के अंदर प्रवेश कराने के बाद जो मूवमेंट है उसको नियमित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और इन तंतुकों के द्वारा पैरामीशियम के शरीर को एक यांत्रिक सपोर्ट मिलता है। यह शरीर को इलास्टिसिटी यानी कि एक प्रकार का लचीलापन देता है। इसके होने की वजह से पैरामीशियम का शरीर संकुचन कर पाता है और इनके द्वारा उपापचय यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी सहायता मिलती है। जब हम पैरामीशियम के शरीर या संरचना की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि यह एक कोशिकीय जीव होता है और पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य को हम 2 भागों में विभेदित कर सकते हैं, यानी पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। बाहर का जो भाग है वह कम एरिया को घेरता है और उसे हम एक्टोप्लाज्म या बहिर्द्रव्य कहते हैं, और दूसरा जो भाग है वह अंतर्द्रव्य या एंडोप्लाज्म कहलाता है। बहिर्द्रव्य को हम
या एक्टोप्लाज्म को हम कॉर्टेक्स या वल्कुट क्षेत्र भी कहते हैं, और जो एंडोप्लाज्म है उसे हम मेड्यूला या बड़ा भाग भी कहते हैं। बहिर्द्रव्य में तंशिकाभक, पक्षमाभ, परापक्षमाभिक तंतुक व पेलिकल का भाग होता है, जबकि अंतर्द्रव्य बड़ा भाग है जिसमें समस्त भाग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गिकाएँ, केंद्रक, कणिकाएँ, संकुचनशील धानियाँ आदि होते हैं। अंतःद्रव्य में आंतरिक पदार्थ का संचरण एक भंवर की तरह होता है। इस जीवद्रव्य भ्रमण को साइक्लोसिस कहते हैं। अंतर्द्रव्य का मध्य भाग में दो न्यूक्लियस होते हैं। एक केंद्रक बड़ा होता है जो कि किडनी शेप्ड होता है या रेमीफॉर्म होता है, सेम के बीज के समान होता है, जिसे कि गुरु केंद्रक या मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। यह सोमैटिक न्यूक्लियस या कायिक केंद्रक भी कहलाता है क्योंकि यह जीव के कायिक कार्यों को नियंत्रित करता है। दूसरा जो न्यूक्लियस या केंद्रक है उसे लघु केंद्रक कहते हैं, यानी माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। यह माइक्रो न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस के समीप होता है, निकट होता है। इसे रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है क्योंकि रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान यह न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है। विदलन इसमें होता है, इक्वल डिवाइड करके ये डॉटर पैरामीशिया बनाता है। पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील धानियाँ पाई जाती है। दोनों सिरे पर यह उपस्थित होते हैं, यानी एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक अग्रभाग में और दूसरा पश्च भाग में स्थित होता है। और इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील धानियाँ बनती व बिगड़ती रहती हैं। ये कोई एक फिक्स्ड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, एक परमानेंट ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। यह दोनों सिरे पर उपस्थित होते हैं, ये धानियाँ बनती बिगड़ती रहती है। इन धानियों की जगह निश्चित होती है और इनसे जुड़ी कुछ रेडिएटिंग कैनाल्स यानी अरीय नलिकाएं होती हैं। ये धानियाँ ऑस्मो रेगुलेशन यानी जल संतुलन का कार्य करती है। इसके साथ ही एंडोप्लाज्म में खाद्य धानियाँ यानी फूड वैक्यूल भी पाई जाती हैं और फूड वैक्यूल्स की संख्या बहुत हो सकती है। यह भी अस्थायी संरचना होती है। पैरामीशियम के मध्य भाग तक एक मुख खाच यानी ओरल ग्रूव पाया जाता है जो कि पक्षमाभ यानी सीलिया द्वारा लाइंड या रेखित होती है। इसे पेरिस्टोम कहा जाता है। यह खाच या ग्रूव कोशिका में जाकर खुलती है। यह स्थान कोशिका मुख यानी साइटोस्टोम, साइटो का मतलब होता है सेल और स्टोमा का मतलब होता है मुख, तो यह स्थान साइटोस्टोम कहलाता है। साइटोस्टोम के नीचे एक नलिकाकार कोशिका ग्रसनी यानी साइटोफेरिंक्स पाई जाती है, जिसके अंत में सामान्यतः फूड वैक्यूल बनती है यानी खाद्य धानियाँ बनती है। कोशिका ग्रसनी में अनेक पक्षमाभ सीलिया पाए जाते हैं और इनके 2 समूहों को पक्षमाभ पट्टी या पेनिकुलस का नाम दिया गया है। पश्च किनारे पर जंतु के दाईं ओर मल बहिक्षेपण के समय एक छिद्र बनता है जिसे साइटोपाइज या एनल स्पॉट कहते हैं।
The endoplasm or medulla is the major part of the paramecium. The protoplasm can be divided into two parts: thinner ectoplasm and denser endoplasm. Ectoplasm is a permanent part of the body, strikingly delimited from the endoplasm. The ectoplasm forms a firm, clear, thin, and dense outer layer. It contains the trichocyst, cilia, and fibrillar structure and is bounded externally by a covering called pellicle. Endoplasm is the more fluid and voluminous part of cytoplasm, which contains many cytoplasmic organelles as well as other inclusion like mitochondria, Golgi apparatus, vacuoles, both food vacuole and contractile vacuole, crystals, granules, and chromidia. Other structures like nuclei are present. Nuclei in the endoplasm near the cytosome are two nuclei. Paramecium is heterokaryotic, a large ellipsoidal granular macronucleus, also known as the somatic nucleus, and other small compact micronucleus, also known as the sexual or the reproductive nucleus. Macronucleus is conspicuous, big, ellipsoidal or kidney shaped. It is of a compact type containing threads and tightly packed discrete chromatin granules of variable size and embedded in achromatic matrix. It possesses many nucleoli and much more chromatin material. The somatic or vegetative nucleus is the macronucleus. It divides amitotically and controls the vegetative function, that is, the metabolic activity of the animal. It undergoes mitosis. Micronucleus is small, compact, and spherical. It is found close to macronucleus, often in its concavity. Fine chromatin granules and thread are uniformly distributed throughout the structure. The micronucleus divides mitotically and controls the reproduction. The number of micronucleus varies with the species. It is 1 in Paramecium caudatum, 2 in Paramecium aurelia, and many in Paramecium multimicronucleatum. The micronucleus contain a distinct nucleolus in Paramecium aurelia, but it is not found in Paramecium caudatum. Mohs reported that macronucleus and micronucleus are identical in chemical composition. Contractile vacuole. There are two large liquid-filled contractile vacuole situated near the end of the body, close to dorsal surface. Their position is fixed. Unlike amoeba, the one bigger contractile vacuole is present at the anterior end of the body and the other present at the posterior end of the body. They lie between ectoplasm and endoplasm, but they are temporary organelle, disappearing periodically. In some species, they appear to have a lining membrane, in which case they do not disappear entirely during systole.
Connected to each contractile vacuole are 5 to 12 tubular radiating canal, each consisting of a terminal part, long ampulla, which collapses when empty, and a short injector canal, which opens into the vacuole. This is a diagram of vacuole, contractile vacuole. One of the radiating canal is shown. The various parts of the radiating canal are 1. Terminal part, ampulla, and the injector canal. The canal communicate with larger part of the body from where they take up liquid and pour them into the vacuole, which is thus reconstituted and grows in size. When the contractile vacuole reaches its maximum size, it contracts suddenly and discharges its content through a permanent pore in the pellicle. Then the canal again forms a contractile vacuole. The canals do not disappear entirely since they are the permanent structure. The two contractile vacuole discharge irregularly. The posterior one contracts more rapidly because it is near the cytopharynx and more water comes into it. The main function of the canal and contractile vacuole is hydrostatic, that is, they remove excess of water from the protoplasm. The water is partly absorbed and partly taken in while feeding. The nitrogenous waste substance has ammonia compound and some urates which are expelled from the contractile vacuole along with carbon dioxide, but there is no evidence of the excretory matter being secreted by the protoplasm into the canals or contractile vacuole. There is a permanent cytopage or anus below the peristome to one side of the cytopharynx through which the undigested food and urates are expelled. Electron study of contractile vacuole has revealed that each contractile vacuole consists of some tubules of endoplasmic reticulum. The nephridial tubules or feeder canal, the accessory vacuole, and main contractile vacuole. The accessory vacuoles are supposed to be the ampulla of the feeder canal. Food vacuoles. There are number of food vacuoles. These are roughly spherical, non-contractile bodies varying in size and number lying in endoplasm. They contain ingested food particle, principally bacteria, and small amount of fluid bounded by thin definite membrane. Volkonsky proposed the name gastriole for these vacuole. Associated with food vacuoles are the digestive granules.